Okay. So the next topic I told you is that in custom directive only, I am going to tell you what is element ref and what is renderer. So what we will do is, say this, in app component HTML, I have this div, okay. To this div tag, I want to append the child node or a child element, another div inside div, suppose. Using DOM manipulation, I want to do it. So what I can do is, or even this changing the background color, style, or text property, you can do it in another way, one more way. For that, what you will do is, inside that directive, paragraph or this div directive, paragraph directive, app highlight, right? Hmm. Let's make it as a div instead of the paragraph. Let's first of all start it. It's running already. Okay, fine. Okay. Now what I will do here in this app highlight directive, in the constructor, I will inject element ref and I will inject a renderer of type renderer 2. Now what are these both the things? These are the existing services that I am using. Okay. So when I inject this element ref and renderer 2, what is element ref and renderer 2? First of all, I will explain. So these are the services which Angular will inject for you. You will just mention it over here in the constructor and Angular will inject those inbuilt services for you. Element ref is going to be a reference, a wrapper around the native element inside a view. It's a wrapper around the native element. Which native element it is going to refer? This is the attribute. This is attribute. So it cannot refer. This is not an element. This is attribute. So when I say that it's going to refer the element, it is going to wrap the native element. Which native element it is going to wrap? That element in which I am using this directive. Which is that element in which I am using this directive? Div is the element in which I am using this directive. So element ref is going to give you reference to this particular native element, div. Okay. So, and renderer 2 is what? Renderer 2 is a class. Extend is the base class to implement custom rendering. Okay. Any DOM manipulation you do and you alter that element in any way, you know that it has to be repainted in the DOM. So how does Angular do DOM manipulation? By repainting that part of your DOM using renderer2 class. So it uses a renderer class to renderer2 instance to render that particular element again in the DOM. Okay. So you will have to use both of them if you, so if you see renderer, no, it will have all these methods, this dot renderer. This is a local variable renderer, right? You will have to assign if you want to, if you intend to use it later on, you will have to assign it. Let's call it as a public. If you say public, you don't have to assign it. It will remain with the same. So this dot renderer. If you say dot, you will see that all these methods, append child, create element. So any DOM, these are the DOM manipulation methods. JavaScript, HTML DOM में अगर manipulation आपने कभी किया है तो आपको पता है कि आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से एलिमेंट लेते हो और फिर उसमें अगर चाइल्ड एलिमेंट ऐड करना है तो आप अपेंड चाइल्ड बोलते हो, है ना. नया एलिमेंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट एलिमेंट बोलते हो. So right now I will do the same thing. I will create a new element. I want to create a div inside div. So I will create a new element called as div. Let's call this as
I will create an element called as div. And to this, I will append the text. Append child. How does the append child method, what does it take? It expects two arguments. Okay. Parent and the new child. Okay. Okay. So parent is going to be your what? You want to append child to which parent element? This native element you want to append, right? So what is the parent? This dot ele dot native element is your parent. And inside that you want to add this div element which you have recently created. Okay. So you will say what? This dot div. Okay. Understood? But this div is empty. You will have to assign something inside div, right? Div properties, you will have to check which div properties are there. This is that div, right? Div, this is input element. This is the first div and this is the second div. First div, you don't, this is second div. So you have appended a div inside div. Let's check what are the properties of a div. So this inner HTML and inner text properties there. Let's try to change the inner text or inner HTML property. Let's try to add a span instead of a div so that we'll understand. Okay. So instead of a div, let's add span. Because div already है उसमें.
This is a variable. And this is the actual element. Let's see span add हो रहा है क्या. Inner HTML property I already. It's still saying inner HTML, although I have modified that property. Okay, it's not picking up the changes. Just restart the application. If it is still showing you the old changes, just restart the application from here. Bracket expected. Okay, there is some error. So there is a bracket expected here. Okay. Okay. Now let's see the span is getting added. App root, this is the second div. Inside second div, you will see the span is getting added. But span के अंदर का content empty है. So you want to add a content to that span, right? So how will you add a content to that span? Just wait. So just create text. You will create a text and append the child. Okay, so you have to create a one more text and then you have to append it. Okay, understood. So coming back here, span में आपको कुछ डालना है. So you created a span. So this dot renderer dot get text. And then what you will say, this dot renderer dot append child. In append child, what you will say, where you want to attend, you want to append it to the my span dot native element. To this my span native element, you want to add this text. Okay, so you have created a span, then you have created a text, and then you have appended child. You're using renderers append child method, and using append child method inside span, you are appending a text element. Okay, so now a span is created with the text property called as this is span. Once that span is created, that my span you want to add inside this parent. This is the host element. Host element. Host element is what? Host element is the div. Host element is nothing but this parent div. Inside that you want to add this span. So you will say this dot renderer dot append child. This native element is your div and this is the span which you have just now created. स्पैन क्रिएट करने के लिए क्या किया आपने? स्पैन का एलिमेंट क्रिएट किया, एक टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट किया और उस स्पैन के अंदर उस टेक्स्ट एलिमेंट को असाइन किया. ओके, नाउ यू विल सी. और फिर उस स्पैन को अगेन अपेंडेड इनसाइड द नेटिव होस्ट एलिमेंट विच इज योर div, जिसमें ये डायरेक्टिव आपने लगाया हाईलाइट डायरेक्टिव. नाउ यू विल सी ये सब आपने कंस्ट्रक्टर में ही कर दिया है. तो आप यू विल सी दैट see if there is some error.
Same thing I am doing, Madam. And let's try to do this entire thing, not in the constructor. Let's try to do it on the click event. Let's see whether a span is getting added. Yes, span. See this span. Can you see inserted at the bottom? Okay. So it is getting added. Okay. Why it is not see inserted at the bottom? दिख रहा है नहीं? Okay. We are seeing this. हर बार क्लिक करोगे बार बार ऐड होते जाएगा. So it is working. You're appending a child inside it. उतने बार span add होता गया. You are manipulating the DOM. Every time you click, it is going to do the same thing. Create a span element and render it as a child element to the native host element. That is your div. Okay. So what did you use for that? You used reference to your host element, which is ELE, which is nothing but this element ref. And then to do the DOM manipulation, to add a child element or a text element, you use this render. Okay, this is what you can this is why you will use this renderer and the element ref. Okay, even style and all this style change करने के लिए आपने यहाँ पे होस्ट बाइंडिंग किया है. होस्ट बाइंडिंग से आप स्टाइल चेंज कर रहे हो. सेम स्टाइल आप एलिमेंट रेफ से भी चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज इट यूजिंग एलिमेंट रेफ ऑल्सो. अगर आपको रेंडरर 2 से भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हो. इफ यू सी ओवर हियर. ओके, यहाँ पे क्लिक में ये बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर रहे हो. अगर आपको रेंडरर 2 से इसे करना है तो आप कैसे करोगे? दिस डॉट रेंडरर डॉट सेट स्टाइल. सेट स्टाइल में क्या बोलोगे? कौन से एलिमेंट की स्टाइल आपको चेंज करनी है? करंट एलिमेंट की, नेटिव एलिमेंट की स्टाइल चेंज करनी है. कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है आपको? बैकग्राउंड कलर. ये एक बार देख लेना कि कौन सा कलर सेट करना है. दिस डॉट न्यू बीके कलर. ठीक है. So you can also set the style instead of using host binding and then instead of doing host binding and then assigning to that host binding variable, assigning a value, input color value, you can directly render dot set style से भी native element का background color आपको change. अब इसको this is like without using @host binding annotation. If you want to change the style or if you want to change the attribute value, you can directly change. जैसे set style आता है वैसे ही set attribute method भी आती है. तो या तो आप रेंडरर यूज करके एट्रीब्यूट और स्टाइल चेंज करो या फिर आप होस्ट बाइंडिंग एनोटेशन यूज करके चेंज करो. आपकी मर्जी. ओके. हो गया? राइट. अब ये तो नहीं, मैंने ये तो कमेंट कर दिया है तो ये नहीं होना चाहिए था. बट कलर चेंज हो रहा है किसके वजह से? सेट स्टाइल की वजह. ओके. So this is why you will use this renderer. It has several properties: append child, append renderer, create text, create element. Create element will create a new element. Create text will create a text element.
देन अपेंड चाइल्ड विल अपेंड टू द पेरेंट एलिमेंट। जैसे अपेंड चाइल्ड है वैसे और भी काफी सारे, आपको अगर चाइल्ड करके अपेंड नहीं करना है और आपको पेरेंट करके अपेंड करना है, ओके, तो ये देखो, सिबलिंग करके भी आप नेक्स्ट सिबलिंग बोलोगे तो उसी लेवल पे इंस्टेड ऑफ अ चाइल्ड उसके आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सी जैसे आप ऐड करोगे वैसे रिमूव भी है, क्लिक पे आपने ऐड किया है, आपको सेकेंड क्लिक पे टॉगल करना है तो नेक्स्ट क्लिक पे आप हटा सकते हो उसको, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट है, सेट प्रॉपर्टी है, सेट स्टाइल है। तो सारी चेंजेस जो आप एट द रेट होस्ट बाइंडिंग और एट द रेट होस्ट लिसनर से कर रहे थे पहले, same changes you can do using this dot renderer method, because all those methods are available with this dot renderer also. And when you will change it using this dot renderer, first argument to any of the renderer methods that you will pass will be your native element, host element reference you will need, because you are going to change the style of the host element. So how will you get a reference to your host element? Using this dot element ref, it will give you reference to your host element. You will have to pass that as the argument. So you are saying host element जो है मेरा, जो भी है जिसमें मैंने ये डायरेक्टिव यूज किया है उसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज कर, ठीक है, क्लिक पे, ओके। और कुछ करना है तो दिस डॉट सपोज रेंडरर डॉट सेट एट्रीब्यूट है, या सेट से सपोज प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, आई एम नॉट अवेयर किसकी प्रॉपर्टी है, दिस डॉट एलिमेंट डॉट नेटिव एलिमेंट। इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी है क्या इसकी, आई डोंट नो, अगर होगी तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यू विल हैव टू चेक दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विच यू आर हैविंग, इट शुड हैव दिस काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी। आ गया देखो, दिस इज द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी ऑफ दिव, ये आया, और फिर उसमें आपने चाइल्ड एलिमेंट डाला था, स्पैन डाला था अंदर, इंसर्टेड एट बॉटम, वो भी आ गया, राइट। तो यू सेट प्रॉपर्टी से आप प्रॉपर्टी भी, कोई भी प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो, ओके। so that is why you will use this renderer and the native element का native element का wrapper, native element host element का wrapper is this dot element which is of type element wrapper, this one. So you decide if you want to use host binding and host listener annotation, or you want to do all the manipulation using element reference and renderer. It is up to you. Both ways I have told you. Okay. So that's it. I have shown you, I have manipulated the DOM using changing the property of host element, changing the style of the host element, appending a child to a existing element. You can even append a parent, you can append a sibling, create a sibling to it and all that. All kind of DOM manipulation methods which are possible with a plain HTML, JavaScript or jQuery, or everything you can do using renderer. Okay. This dot renderer dot whatever methods are available you can use, and you can do it to that host element. होस्ट एलिमेंट का रेफरेंस इनडायरेक्टली आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको इनडायरेक्टली होस्ट एलिमेंट का रेफरेंस मिल जाएगा। अब उसके अंदर आपको जो भी करना है, चाइल्ड एलिमेंट बनाना है तो पहले क्रिएट एलिमेंट से चाइल्ड एलिमेंट बनाओ, फिर उसको इस होस्ट एलिमेंट के अंदर अपेंड चाइल्ड से एम्बेड करवा दो, ठीक है। या पेरेंट क्रिएट करना है, बिफोर, अपेंड बिफोर भी होता है, अपेंड आफ्टर, अपेंड बिफोर, ये सारे मेथड्स आपको मिलेंगे। So I'm stopping over here. So this covers our directive, custom directive topic. Okay. And as we discussed earlier कि हम क्या cover करने वाले हैं इस सेशन में। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था
कि हम ये सारे एनोटेशन देखेंगे, कौन से @host listener, @host binding, एलिमेंट रेफ एंड रेंडरर। तो ये चारों चीजें हमने देख ली डायरेक्टिव में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखने वाले हैं वो एनोटेशन @viewchild एंड @viewchildren. Why we will be using @viewchild annotation and @viewchildren annotation, but that is different thing, that is not related to custom directive. Custom directive topic is now over. Okay, if you want to use this renderer and element ref, I would suggest आप भी एक एग्जांपल करके देखो। ये मैंने हाईलाइट डायरेक्टिव में किया है। आप सिमिलरली आपने खुद का जो कस्टम डायरेक्टिव बनाया रहेगा उसमें कोई तो चाइल्ड एलिमेंट div यूज किया है, होस्ट एलिमेंट जिसमें वो डायरेक्टिव यूज किया है, तो उसमें कोई चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट करके अपेंड करके ट्राई करके देखो। Also try to change the style and the property of that particular host element using a renderer. Okay, so try one example on your own. इनपुट टैग के लिए करके देखो, इनपुट टैग की वैल्यू प्रॉपर्टी जो है वो रेंडरर से चेंज करके देखो। यहाँ पे हमने वही किया है ना, यहाँ पे इनपुट, ये न्यू नेम डायरेक्टिव क्या है, किसमें यूज किया है आपने, न्यू नेम डायरेक्टिव इनपुट पे यूज किया है, बट आई एम चेंजिंग द वैल्यू प्रॉपर्टी यूजिंग व्हाट, यूजिंग होस्ट बाइंडिंग annotation. I would suggest you do the same thing but using renderer and the element ref that you are injecting into the constructor. So you will have to inject it into this constructor. New name directive के constructor में आपको यहाँ पे वो element ref और renderer inject करना पड़ेगा, और फिर उसको यूज करके आप ये बैकग्राउंड, ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आप चेंज कर सकते हो। दिस डॉट रेंडरर डॉट सेट प्रॉपर्टी करके मेथड है, उससे आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग।